अध्यक्षा सर्वो, अध्यक्षा एरवो, श्री अनुपम शर्मा, एडिशनल जनरल मैनेजर, श्री संजय मुखर्जी, एक्स फाइनेंशियल कमिश्नर, रेलवे बोर्ड, श्री राधेश्याम, जनरल मैनेजर, एक्स जनरल मैनेजर, साउथ ईस्टर्न रेलवे, श्री गोपाल मोहंती, एक्स चीफ ऑपरेशन मैनेजर, साउथ ईस्टर्न रेलवे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सर। अन्य सभी जो यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बीएनआर रिक्रिएशन क्लब अपना योगदान खेल कूद के क्षेत्र में देता रहा है। हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, वाटर पोलो, इन सभी खेलों में न केवल महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं जीती बल्कि देश को भी कुशल, दक्ष खिलाड़ी दिए, जिनमें से प्रमुख सुकुमार देव, तापसेल, ऐसे अनगिनत नाम आ सकते हैं। इन्हीं सभी तथ्यों से और आज के कार्यक्रम के लिए स्वागत अभिभाषण देने के लिए मैं हमारे बीएनआर रिक्रिएशन क्लब के अध्यक्ष महोदय श्रीमती जे.के. शाह से निवेदन करता हूं, सर आए। Namaskar. Good evening. I would like to give you a hearty welcome in today's function of a musical evening, as you heard that it is being organized after 10 years. South Eastern Railway was conceived in the year 1897, and in 1906 and 7, the BNR was formed in Calcutta, and rest of the period was under construction. This recreation club was constituted in the year 1929. This club has a glorious history where it starts in the field of hockey. In 1937, when the Baton Cup started, it was South Eastern Railway or BNR club which took the laurels. Because after 1952, it became South Eastern Railway, and in 1955, the South Eastern Railway Sports Association was formed. But in the field of games, BNR still plays an active role because BNR is a registered club and it is affiliated with Cricket Association of Bengal, Indian Football Association and Indian Hockey Federation. Many Olympians were produced by this club and they have represented India and has brought laurel to this club. I will name some of them, like players like Joginder Singh, Hamid, Kushpal Kumar, Bhola Chakravarti, Paira Singh, Mustaq, and last not the least, Leslie Claudius, Olympian, who were proud employee of BNR/South Eastern Railway. In football, we started off as a second division club, and later on, we went to play the first division, giving tough competition to Mohun Bagan, East Bengal, and Mohammedan Sporting. In the year 1963, Railways won the blue ribbon of Indian football, the prestigious IFA Shield. And thereafter, this club has been doing well in all the football competition that has been held in and around the state of West Bengal. Some of the renowned footballers of BNR are Mewalal, Varalu, Rajendra Mohan, Anthony, Tirsky, and Sri T. Balaraman and Sri Arun Ghosh. All of us know them because they are also the present coach. They have led India, they have represented in Asian Games, and they have brought laurels to all of us. In cricket, we have been giving valuable players to the state of West Bengal in representing in Ranji. Players like S. Ghosh, Sumit Som, Gopal Chakravarti, who was a wicketkeeper, Sri Sujit Bose, Kamal Bhattacharya, R.P. Ram, Ashok Mustafi, and Sri M.P. Parmar. There are other games like badminton. We have produced Sri Deepu Ghosh, who was a national player and an Arjun awardee. He, along with Madhumita Goswami, now known as Madhumita Best, was also from South Eastern Railway. She is also an Arjun awardee, and they have brought a lot of laurels to the country and to South Eastern Railway. Another field of excellence of this club was swimming and water polo. I will name
I'll take the name of Srimati Aarti Gupta Saha. She was the first lady to cross the English Channel. We are proud to say she was from South Eastern Railway. We have Dr. Bimal Chandra, we have Sri Arun Shaw, we have Sri Ashish Das, Madhusudan Haldar, Sri Tarun Goswami, P. Mitra, Boni Talukdar, Amar Roy, Tapan Malakar, Purna Das, Tapos De. They are all represented Indian Railways, nationals, and they have brought laurels to the country. Once again, on behalf of all my members and General Secretary Sri Nikhil Guha, I invite you to this evening to have a lovely musical night. Thank you and welcome. I just recall, sir, because of your wonderful narration, BNR रिक्रिएशन क्लब की तरफ से मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया, परंपरा और अतीत का संबंध बहुत ही सघन रहा है, समय धारा के साथ साथ चलता है परंपराओं का निर्वाह और उनका प्रवाह। ऐसी ही एक परंपरा है कि शुभ कार्य के पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं, जिसके लिए मैं मंच पे आसीन उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि महोदय से मैडम से निवेदन करता हूं कि मैडम दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। I'll request all the guests present on the dais, including chief guests, to inaugurate the book. पुस्तक विमोचन के लिए मैं सभी मंच पर आसीन मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करता हूं कि विमोचन करें। यह किताब दक्षिण पूर्व रेलवे के गौरवशाली इतिहास को लिपिबद्ध कर रेखांकित करती है। सभी महत्वपूर्ण घटनाएं, दुर्भाजन, उसके परवर्ती काल के परिवर्तन, उन सभी का इस उपमहाद्वीप में जो समृद्धशाली क्षेत्र है उसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे उत्प्रेरण रहा, उन सब का इसमें एक जीवंत चित्रण है। आगे आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी यह एक संदर्भ का कार्य करेगी कि दक्षिण पूर्व रेलवे बंगाल नागपुर रेलवे से चलती हुई कैसे उसकी कार्यशैली का विकास हुआ। श्री मोहंती सर ने एक और बुक इससे पूर्व में भी लिखी है, द फ्रेट लीगेसी ऑफ बीएनआर, जो मुख्यतः दक्षिण पूर्व रेलवे के प्रमुख फ्रेट कैरिंग रेलवे के रूप में और ब्लू चिप रेलवे के रूप में विकसित होने के संबंध में हम सबको बताती है। धन्यवाद सर। नाउ Good evening, everybody. It's a very pride moment for me to felicitate, to give this samman to my brother who has written this book, and I am proud of Indian Railways. I am proud to be a part of Indian Railways. Long live the heritage and long live Heritage Recreation Club. All the best to all the members. Flourish the way it is. In dais, I will not call Rasmi Rekha Misra, I will call Rasmi, the name by which I used to call her for last. Since she is married, I can put it that way. And Mr. Sanjay Mukherjee, ex-Finance Commissioner, Mr. Radheshyam, my ex-General Manager, he was my last General Manager while I was in service, Mr. Sharma, AGM, and of course the friend, Mr. Shah. Ladies and gentlemen, boys and girls, good evening. I'll just take 2-3 minutes how this book came about. This book actually came about because of the initiative taken by Mr. Agarwal. Today I spoke to him, who was the previous General Manager. He gave the idea that why can't have a documentation of 15 years of the present Southeastern.
I told him that for 15 years you cannot have a book, so you have to trace it from the back. So this is virtually a 131 years history in a capsule form. While writing the book, it was really a challenge in the sense getting the photos, getting the materials, getting the input from the different departments. Thanks to CPRO Sanjay Ghosh, who was the initiator, who really prodded me to get it. And especially Punnendu. I had now unhindered access to his room to get any information I wanted to have. And on my behalf, he used to also talk to the person concerned to get it. And when you read the book, his Romancing Southeastern Railway is a masterpiece. I know in what condition he has written up to night 3 o'clock, but it's worth it. Now, I remember once our CSC Mr. Padi he told me कि मान साहब किताब कब निकलेगा? Already it's too late. Because he is the only person who really promptly reacted to my request. And I got the support from everybody. I am really thankful and grateful to you all. And what a coincidence. BNR Recreation Club function coincides with the release of Bengal Nagpur Railway legacy. Both are correct. It is a legacy which is having a function, and it's a legacy which is a book form. It is there today. And I wish Punnendu would have been here. Last night we spoke. But it's a rare occasion. Before me, Rashmi did tell. A sister, younger sister, releasing the book of an elder brother. It's a rare occasion I will cherish. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Thanks a lot. Honorable Chief Guest of today's function, Mrs. Mishra, President Sarvo, Shri Sanjay Mukherjee, Retired Financial Commissioner, Shri Mohanty, ex-Chief Operating Manager of Southeastern Railway, distinguished guests on the dais, Shri J.K. Saha, President, BNR Recreation Club, all principal heads of departments of Southeastern Railway, all the officers and their families, members of the BNR Recreation Club, all the guests present over here, including the press, ladies and gentlemen. After a long gap, BNR Recreation Club is organizing the cultural program called the BNR Night 2019. On this occasion, a book titled Bengal Nagpur Railway, A Legacy, written by Mr. G.K. Mohanty, ex-Chief Operations Manager, Southeastern Railway, has also been inaugurated. This book documents not only the bygone era of Bengal Nagpur Railway and the existing Southeastern Railway in the age of fast-moving technology, but it details the working of Southeastern Railway, which is very informative, as well as it is a document for posterity. As Mr. Saha pointed out earlier, BNR Club was established way back in the year 1929. Since then, the achievements of the club have been historic, especially in the fields of hockey, football, and cricket. The club is renowned not only in West Bengal, but it has made its presence felt all over India. From 1930 to 1946, as Mr. Saha also said, BNR ruled Indian hockey and, in fact, owned the Baton Cup in the year 1937. So it has a huge, very rich legacy. The team and the BNR produced stalwarts like Tarun Sen, Leslie Claudius, Galibardi, Joginder Singh. BNR also owned the IFA Shield in the year 1963. So many renowned footballers like Mevalal, T. Balaram, Arun Ghosh have played for BNR Club. It's indeed a proud privilege for me to be present on this occasion and be a part of these of the BNR Club. Many of us who have grown up in the eastern part of the country, we've all
been always reading about the exploits of the BNR club. The famous football teams, the encounters they had, as Mr. Saha also pointed out, is indeed a proud privilege to be part of the club. In the field of cricket also, the club has shown remarkable achievements and is still maintaining its first division status in the CAB League, IFA and Hockey League. All the members of the club and officers and supervisors, I request that they should actively take part in the continuing glory of the club for the recreation of the members and also to motivate the players of the club. This function has been organized after a long gap. Our General Manager, Mr. Purnendu Mishra, has not been able to grace the occasion due to his pre-engagement, but we would like to thank him for his guidance and the leadership that he has shown in resurrecting the activities of this club, and I'm sure that his efforts will pay rich dividends. I convey my best wishes to all the members, dignitaries, officers and members of the organizing committee who are making this event a grand success. Thank you. The chief guest has desired that we should give a standing ovation to all the players who had brought laurel to this club. I'll request everybody to please stand up and give a standing ovation to all the players who have represented our country and brought laurel to this country and have been a proud employee of BNR / Southeastern Railway. दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए आकाश कानो डाके মন ছুটি চায় ময়ূর পঙ্খী মেঘ হয়ে যায় ভেসে যায় আশা জাগিলো মধু লগনেতে বাড়ালো পিয়াসা পুতনা করেছে মোরে পুতনা করেছে মোরে আমারে ভালোবাসা অনুরাগ প্রেম সলিলে দিক ভুলেছি আমি শোনো গো দক্ষিণ হাওয়া প্রেম করেছি আমি দহন বেলাতে আমি প্রেমেরও তাপসী বর্ষাতে প্রেম ধারা বাদল बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कहीं कहीं बार
पूछ गए किए आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए जो भी चाहे जो भी किया हमने किया शान से दोस्तों से याद दिया दुश्मनों से बदला लिया जो भी किया हमने किया शान से बचना हसीनों लो मैं आ गया काज राते को केड़ने बे चेपीरी ओ छारको तोरे देवे चमन कोरे तिने डाकाती परबप 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 যত পুলিশ আর দারোগা লাগিয়ে দাও ধরতে যে কেউ পারে না শোনো মন বলি তোমার সব করো প্রেম করো না এই কাঁঠালের আঠা আর লাগলে পরে ছাড়
छाड़े ना। যাবগো সেই দেশে যেখানেতে প্রেম অজানা, কাজ নেই শুধু শুধু কাল কেটে তুমি রানা। প্রেমের ভূতে যদি একবার ধরে গো, ওঝা সে ভূত ছাড়ে না। শোনো মন বলি তোমার, সব করো প্রেম করো না। প্রেম যে কাঁঠালের কাঁঠা, আরে লাগলে পরে ছাড়ে না। এই শোনো মন বলি তোমার, সব করো প্রেম করো না। প্রেম যে কাঁঠালের কাঁঠা, আরে লাগলে পরে ছাড়ে না। देखा ना हरे सोचा ना हरे रख दी निशाने पे जा, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। कातिल है कौन कहाँ नहीं जाए, छुप भी तो राह नहीं जाए। और बुलबुल है कौन कौन सही याद, कुछ तो कहो रे मेरी जान। कातिल है कौन कहाँ नहीं जाए, छुप भी तो राह नहीं जाए। बुलबुल है कौन कौन सही याद, कुछ तो कहो रे मेरी जान। देखा ना हरे सोचा ना हरे रख दी निशाने पे जा। ऐसा लगता है तुम बनके घटा, अपने सजन को भिगो के खेल खेल रही हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। ओ बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। दिल ने पुकारा देखो, रुद्र का इशारा देखो, उफ ये नजारा देखो, कैसा लगता है बोलो। ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त बन के ये झोंके सया देख रहे हो, देख रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे
कमल कहीं और देखा तुझको दिल में आया देखता ही रहूं भीगे भीगे बदन को तेरे खिलता कमल कहीं मेरी नजर की तुम भी अरे मेरी नजर की तुम भी शौकीन हो गई हो, 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 हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई है लगा है प्यार का वो रंग अरे लगा है प्यार का वो रंग के रंगीन हो गई हो, 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 हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो আমাদের কুমার সাহা এবং আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি পি.কে. বাসু এবং কোর্ট অফিসার সঞ্জীব চক্রবর্তী মহাশয়। আমাদের যে রিপোর্ট আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া আছে সেখানে কিছু কথা অবশ্যই বলা আছে এবং তার সাথে একটা এজেন্ডাগুলো থাকে সেগুলো আমাদের প্রেসিডেন্ট আপনাদের সামনে বলবেন। আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেবকে অনুরোধ করছি যে মিটিংটা দায়িত্ব পরিচালনা করবার জন্য আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে এটাই আমাদের অনুরোধ। Nunca va a ser introducción to the new executive committee members and officers of PNR RC elected during the year 2017. एसके पंडित हॉकी इंचार्ज स्टोर अमित घोष फुटबल सेक्रेटरी जवाहरलाल क्रिकेट सेक्रेटरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अदृश कुमार घोष एसिस्टेंट क्रिकेट सेक्रेटरी पर्सनल डिपार्टमेंट एसिस्टेंट फुटबॉल सेक्रेटरी सुगंधरा कल्चरल सेक्रेटरी आदम सरकार कमिटी मेंबर देवव्रत मल्लिक कमिटी मेंबर सोमनाथ चक्रवर्ती कमिटी मेंबर पेंदु चक्रवर्ती मेडिकल डिपार्टमेंट कमिटी मेंबर अमोलित चटर्जी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट मुंशी कामरुज्जामान सीसीआर ऑफिस रवींद्रनाथ बसु कमार्शियल ब्रांच ग्राउंड सेक्रेटरी तापक सेनगुप्त कमार्शियल ऑफिस रहमान जनरल शिक्षापद दास इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कुमार राजचौधरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर আপনারা আমাদের অফিস বেয়ারার এবং কমিটি মেম্বারদের সাথে পরিচিত হলেন। First of all, I welcome all of you for attending annual general meeting. In this occasion, I would like to convey my heartiest greetings to you on behalf of the Education Club. During the preceding years, we lost the following legendary sports persons, officials of BNR Education Club, for their sad demise, such as late Rahul Mehwala, Amol Dawson, Sudhir Chatterjee, Sunil Das, S.K. Kohn, all legendary footballers. Shanti Gosar, Sushil Bose, R.K. Ram, Gopal Chakraborty, Robin Das, all legendary cricketers. And আমাদের একটা জায়গা আমরা লিখতে ভুল করেছি, তপন চৌধুরী, উনি আমাদের এক ফুটবলার এবং কোচ ছিলেন, ওনারও স্যাড ডিমাইজ হয়েছে। আব্দুল হামিদ, বিপুল বড়ুয়া, রাজেশ সলমান, all legendary hockey players. Manodar Banerjee, Probin Mukherjee, ex-AGS BNR Club, Torun Ghosh, ex-Treasurer and so on.
Please forgive me if I have not included the person's name who was associated with DNR and died in recent past. Before coming to the main proceedings of AGM today, I would like to highlight the history of DNR Recreation Club, indicating all achievements from its inception. DNR is to Indian Railways had what Calcutta is to Kolkata. Both evoke a sense of history and nostalgia of premier status. It was board all over when the team won the Khandwa Gold Cup in 1966, 1969 and 1970. The cricket team won championship in TV first division knockout tournament in 1963. That was the first time we won the first division knockout tournament. Needless to mention that some followers of them, including some Olympians, don the colors of this club. Names of Sarvaswati Shivaji Bose, late Mewalal, Devu Bose, Arun Bose, R.P. Saha, late Govindo Singh, Kokar Bhandari, P. Balaraman, Bharalu, late Vidul Krishna, Tarun Goswami, Devu Bose, Tarun Sen, late Shanti Goswami, N.P. Farmer, and late A. Hamid are just only a few among a host of other notable luminaries. Few remarkable achievements in recent past are as follows. Runners-up in first division Kolkata Hockey League 2007 and 2009. 3 runners-up in 3 first division cricket league, knockout and Christian Trophy in 2008. Runners-up in Chicken Governor Gold Cup India 2009. TV first division cricket league champion defeating East Bengal India 2011. We never became TV cricket league champion. In DNR history, it was our first victory for TV league champion. I must congratulate all the players, mostly 30 players, officers, committee members of the previous committee and other club members who are associated with this victory. We believe that that is the golden moment throughout our life. We became runners-up in 8 Gold Trophy in 2011 also. Gratitude to all employees of Southeastern Railway, especially members of DNR Recreation Club, state officials, ground staff, Mali for DNR Recreation Club and state staff, who have rendered their support and help for running this club activities smoothly in the North Delhi. I must extend my gratitude to the PTS and President DNR Committee for giving enough support in achieving the best result since 2006. I am sorry to say that in spite of several requests from member side, we could not arrange annual cultural evening under some unusual circumstances. I am pleased to inform you that we are discussing issue with our present president for organizing DNR cultural evening. Our president is kind enough to give his verbal approval for organizing annual cultural evening. Hopefully we will be able to organize cultural evening soon. Renewal of board membership card and election of new members will start soon. Thank you, Mr. Bhatt. I will request the treasurer to please come up and give the report. ব্যাংকে ছিল আপনার একটা ব্যাংকে ছিল আপনার 2,62,509 টাকা, আরেকটা ব্যাংকে ছিল 6,57,780 টাকা। গ্র্যান্ড যেগুলো পাওয়া গেছিল সেগুলো এসডিএফ কোম্পানি 30,000 টাকা পাওয়া গেছে, ডিএবি থেকে গ্র্যান্ড পাওয়া গেছিল 6,15,520 টাকা, আইএফএ থেকে গ্র্যান্ড পাওয়া গেছিল 36,300 টাকা, বিএইচে দিয়েছিল 8,000 টাকা, ডোনেশন 1,13,800, ব্যাংক ইন্টারেস্ট 22,843, আর কিছু ক্রিকেটে আর ফুটবলের টাকা ফেরত দিয়েছিল 500 টাকা, 3,000 টাকা, 10,000 টাকা। টোটাল ছিল আপনার 18,99,317.16। পেমেন্ট সাইডে আপনার ফাইন দেখবেন একটু। ফুটবল এক্সপেন্সেস গেমসে ছিল আপনার 46,157, ট্যাক্সিতে ছিল 1,26,053 রুপিস, গিয়ারতে ছিল 20,800 রুপিস,
Keep Fit 2,99,093,000. Convent Store 1,525. Affiliation and entry fees 150 rupees. Token for player purchase 6,360. Thank you. এছাড়া দুটো এজেন্ডা আছে, যে দুটো এজেন্ডাই জেনারেল সেক্রেটারি রিপোর্টে মেনশন করা আছে। এজেন্ডা হচ্ছে in order to promote and improve upon the sports in South Eastern Railway and performance Kolkata League, football, cricket and hockey participate by BNRRC. It is considered necessary that South Eastern and BNRRC should join their hands for rendering logistic support by utilizing internal resources available with them. A memorandum of understanding indicating all modalities to be prepared by both BNRRC and SESA for further implementation. It is mandatory to approve the proposal by the House during AGM before commencing the actual activity of MOU. আমি এখন হাউসের উপর ছেড়ে দিচ্ছি এই নির্ণয় করার জন্য এটা হওয়া উচিত কি উচিত না। যেমন সার্ভিস প্লেয়ার কন্ট্রিবিউশন আমরা কিছু করতে পারবো, সার্ভিস প্লেয়ারদের খেলতেই হবে। আপনারা এর আগেও দেখেছেন যে কটা অ্যাচিভমেন্ট এসছে, সেখানে কিন্তু সার্ভিস প্লেয়াররাই কিন্তু আমাদের সঙ্গে 2011-এ যখন আমরা সিএবি লিগ জিতলাম, সেখানে কিন্তু আমাদের সার্ভিস প্লেয়াররাই জিতেছে। এখানে আর বড় কাপ আমরা কোচিগড়ে গিয়ে জিতেছি, এয়ার ইন্ডিয়াকে আমরা ডিফিট করে, সেখানেও কিন্তু সার্ভিস প্লেয়াররা খেলেছে আমাদের সঙ্গে। সুতরাং আমরা চাই সেটসার পার্টিসিপেশন, সেটসার যদি আমাদের সঙ্গে যদি আমরা জয়েন্টলি যদি কাজ করি, তাহলে সাউথ ইস্টার্ন রেলের বড় প্রমোট হবে এবং বিএনআর রেজিস্ট্রেশন করা গেলেও অনেক ডেভেলপমেন্ট হবে। তো আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব আসার পর, দেশের প্রেসিডেন্ট আসার পর উনি বলেছেন যে বিএনআরকে যদি বাঁচাতে হয় আর সাউথ ইস্টার্ন রেলের যদি স্পোর্টসকে প্রমোট করতে হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সেসা এবং বিএনআর যৌথভাবে এগিয়ে আসুন, একসঙ্গে ওরা কাজ করবে, তাহলেই সফল। এটা আমরা অনেকদিন ধরেই চেয়েছিলাম, যে কোনো কারণে এবং হয়নি, এবং এটা আপনাদের উপর আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। আপনারা বলুন যে আপনাদের রাইট আমরা জানতে চাই, আপনাদের মতামত আমরা জানতে চাই, সেইভাবে আমরা সেকশন এবং বিএনআরের কমিটি করতে আমরা। যদি কারোর কোনো বক্তব্য থাকে এই ব্যাপারে আপনারা বলতে পারবেন। আমি যখন এখানকার এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার ছিলাম, এটা কখনোই ওপেন ক্লাব ছিল না। এই ওপেন সেকশনটা হতো এবং বিএনআর রিক্রিয়েশন ক্লাব চলতো যৌথ হতো। আমি মনে করি যে আমাদের এই ক্লাবের স্বার্থে, বিএনআর রিক্রিয়েশন ক্লাবের স্বার্থে যে প্রপোজালটা আপনারা রেখেছেন, সেটা সর্বান্তকরণের সমর্থন করছি এবং আগামী দিনে এর ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হোক, এই বক্তব্য রেখে আমি এটাকে সমর্থন করি। যে আমি প্রায় 3 দশক ধরে, সিন্স 1989, এই বিএনআর ক্লাবের সদস্য, and I feel proud of being a member of বিএনআর ক্লাব। এই সেক্রেটারিয়াল রিপোর্ট খুব সংক্ষেপে, এই রিপোর্টের মধ্যে যেভাবে বিএনআরের যে ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে আজকের নতুন প্রজন্মের কাছে, এটা কিন্তু একটা দলিল হিসাবে থাকবে এবং তাদের বিএনআর সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা এখানে দেওয়া হয়েছে। বিএনআর ক্লাব সম্বন্ধে একটা আমার কিছু বলার নেই, চলছে। বর্তমানে কিছু অসুবিধে রয়েছে, অসুবিধেগুলো অফিসিয়ালরা ওভারকাম করার চেষ্টা করবেন। আর সবাই আন্তরিকভাবে যদি কাজ করে, যে কোনো জিনিস খুব ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।